Hello, everyone. This is Sarah from the British Council. I welcome you all to today's session of Scotland Pakistan Scholarships for Young Women and Girls, which is now live. And here is your chance to meet the current scholars and alumni. Our guest for today is Wajiha Muazzim, who is currently pursuing her MPhil education from Arid Agricultural University, Rawalpindi. And she will be joining our stream shortly. Hi, Wajiha. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, I can perfectly. Okay. Assalamu alaikum. कैसी हैं? Assalamu alaikum. I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm perfectly fine. Um, Thank you so much for joining us today, Wajiha. As you know, we will be discussing your journey, your experience with the Scotland Pakistan Scholarship, and the whole process which you went through. And before we begin with that, I would very much like to know more about you. Please, could you tell us a little bit about yourself? Yes, sure. My name is Wajiha Mozam. I'm in my final year of MPhil education and from Arid Agriculture University, Rawalpindi. And my major is teacher education. And I have also attained bronze and silver standard from the Duke of Edinburgh International Award of Young People. And I'm also a certified teacher. Um, Thank you so much for the brilliant introduction. So, for those of you who have joined us right now, this is an information session on Scotland Pakistan Scholarship for Young Women and Girls, and this funds undergraduate and postgraduate studies for Pakistani women who are already enrolled in HEC recognized universities all across Pakistan. And this scholarship is funded by the Scottish Government, and these grants basically aim to make higher education more accessible to women and girls and basically to support them in achieving their potentials and ambitions. And we have with us over here Ms. Vijaya Muazzim, who is currently pursuing her MPhil education from Arid University, Rawalpindi. And if you have any questions regarding the scholarship from her and from me, you can comment them. You can write them down in the comment section below, and we will be answering them for you. वजीहा आपको स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप स्कीम का किस तरह से पता चला इनिशियली? I came to know it from my elder sister. उन्होंने मेरे से लिंक शेयर किया था, फॉरवर्ड किया था, एंड व्हेन आई ओपनड इट, इट वाज कनेक्टेड टू योर ऑफिशियल साइट ब्रिटिश काउंसिल, and there was very helpful PDF document, which was a brief introduction to the all kind of instructions थी उसमें. एक eligibility criteria था, and there was a lot of helpful instructions जो आप एक application अप्लाई करने के लिए कहीं से आपको जरूरत पड़ सकती है. देयर वाज आंसर्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो इंशाल्लाह जो भी अप्लाई करना चाह रहा है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मतलब हेल्पफुल, और वो बहुत हेल्पफुल डॉक्यूमेंट था. तो आई थिंक आई केम टू नो बिकॉज ऑफ माई एल्डेस्ट सिस्टर. सो वजीहा, आपके एक्सपीरियंस में क्या एक स्कॉलरशिप जो अवार्ड होती है किसी स्टूडेंट को, हाउ डू यू थिंक इट helps them and facilitates them in pursuing their passions? Yes, it does for sure. एक्चुअली जब आपको स्कॉलरशिप के लिए एक ऑफर मिलती है, और व्हेन यू कम टू नो कि इट इज ऑफरिंग स्पेशली इन योर सब्जेक्ट एरिया, ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, तो इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू परस्यू योर एजुकेशन. क्योंकि आपको पता चलता है एक इंटरनेशनली लेवल पर, एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो एक्नॉलेजमेंट मिल रही है आपके स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. तो एक आप सोचते हो उसके बारे में कि दैट नाउ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल एड, और तो आप उसके बारे में नहीं सोच पाते. बट व्हेन यू आपके पास एक स्कॉलरशिप होती है तो आपके पास एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, आपके पास एक बैकअप तैयार होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जो एक फर्स्ट बुनियादी वजह होती है किसी भी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए. तो आई थिंक scholarships gives you a lot of motivation, leadership skill to start continuing on whatever you're doing. फिर आप एक एक्स्ट्रा सोच भी आप सोच सकते हो कि आप एक स्पोर्ट करना या करिकुलर एक्टिविटी को कंटिन्यू करना, अदर देन जस्ट गोइंग फॉर मैं डॉक्टरेट करना चाहता हूँ तो डॉक्टर के लिए एक परस्यू करना. फिर आप एक मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी सी ग्रो करती है उससे. Absolutely. Thank you so much for answering that. So, Wajiha, what was your experience like with this scholarship?
My scholarship, Alhamdulillah, it was very amazing. It was amazing. Actually, when I came to know कि मुझे ये scholarship मिली है, I was like, okay, अभी interview है, various steps हैं, but the application process was very good. And your team management and the team, you know, they cooperate a lot. तो उन्होंने बहुत अच्छा सा cooperate किया था. एक application process difficult होता है, उस तरह नहीं था बिल्कुल. एक team management के साथ और उनका response time बहुत quick था. तो वो सबसे पहला स्टेप था जो किसी भी पोटेंशियल जो भी अप्लाई कर रहे थे, यू डोंट नीड टू वरी कि आपको कोई डिफिकल्टी होगी, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. और उसके अलावा ये था जो मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट था, बीइंग research student. I came to know such a beautiful surprise gift of laptop, and it was such a blessing, alhamdulillah. तो वो मुझे like I felt it right now कि that was so on time. तो मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, इट हेल्प मी अलॉट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और एक फोकल पर्सन जो हमारी यूनिवर्सिटी के थे, डायरेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट, और उनकी टीम वर्क, उनकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी थी हमारे साथ. तो वो एक इंटरेक्शन आपको मिलता है अच्छे लोगों के साथ, तो ये आपको बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल चीज़ होती है आपके लिए कंटिन्यू करना या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, स्पेशली फॉर द स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप स्कीम. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. It's so good to hear that. So, can you tell us a little bit more about your current projects? Up currently, what exactly are you doing? Right now I'm working on my research study project. उसमें भी जैसा हमारा ICT tools, information communication and technology के tool, हम बहुत familiar तो हैं इससे already, living in 21st century, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में और टेक्नोलॉजी एरा, हम डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में हैं, लेकिन हमें एक क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करने के लिए एक क्वालिटी के कौन से टूल हैं ऐसे जो बहुत बेनिफिशियल हैं एक पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एजुकेशन और रिसर्च के बारे में. तो आई एम गोइंग टू यूज फ्यू ऑफ द ICT टूल्स, स्पेशली मॉक्स एंड OERs एंड CAI सच टूल्स, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कौन से ऐसे इंटेंसिटी हैं जिसके साथ अच्छे रिजल्ट आते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलती है, या स्टूडेंट की कौन सी अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो उनको परस्यू करती हैं, लाइक टू डेवलप देयर ऑन सब्जेक्ट इंटरेस्ट एरिया. इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर हम देखेंगे. ICT tools, especially to find out the impact, how much the impact leaving. तो इस तरह का सारी चीज देखेंगे in my research. That sounds very interesting, and best of luck with that. Thank you so much. आपके future, yes, I can. So I would love to know about your future projects and your future motivations. Actually, because of this scholarship, Scotland Pakistan scholarships, Pakistan especially scheme, actually I was like कि आपके पास जब एक financial background supportive हो जाता है, the very next step is आप पे डिपेंड करता है कि start doing your work now. ओके, तो फिर अभी मेरा मोटिवेशन ये है कि आई रियली वांट टू डू एक अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी पे वर्कआउट करना चाहती हूँ. जिस तरह कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती प्रॉपरली, एक उनको एक फील्ड एरिया नहीं देता, या जिस तरह वन रूम, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बट आई रियली वांट टू वर्क इम्बैलेंस हो उनकी एजुकेशन के लिए. और मेरे 2 पेंडिंग रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिन पे मैं एक आफ्टर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप आई गॉट मोर इंटरेस्टेड to complete it. It was the impact of finding the international donor on student academic achievement, and the second one is on to know about the financial aid schemes. That sounds very interesting. So before moving ahead with the session, I would like to give a few more information on the session. Scotland Pakistan Scholarships for Young Women and Girls is being offered at both undergraduate as well as master's level, and so the award basically covers the tuition fee for the course in eligible fields, university hostel costs where applicable, and travel to and from home to university twice a year for students which are staying on campus hostels. And the subject areas which are covered by the scholarship are education, sustainable energy, food security and agriculture, as well as health sciences. So I will also be walking you through the eligibility criteria, which includes that the applicant must be a Pakistani national who is currently residing in Pakistan. They must be pursuing a 4-year bachelor degree in the
subjects which were mentioned above by me, and they must hold a confirmed admission offer from any ATC recognized university. And if you have any further queries, you can post them in the comment section below, and you can also email us. And the email address is mentioned in the pinned comment in the comment sections. So, वजीहा, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं और एप्लीकेंट्स हैं, वो अक्सर उनको कुछ चीज़ें चैलेंजिंग लगती हैं. फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को पर्सनल स्टेटमेंट पर्टिकुलरली चैलेंजिंग लगती है. सो आपके लिए ये एक्सपीरियंस किस तरह का था? पर्सनल स्टेटमेंट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होती है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छा है, मीन्स टू से कि स्टेप वाइज बहुत इजीली एक बच्चे को इनकरेज करने के लिए बहुत कि स्टेप वाइज, स्टेप 1 लाइक योर ओनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन, बायो इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट योर नेम, योर फादर नेम, योर CNIC, थिंग्स लाइक दैट. फिर उसके बाद आपका एक सेकंड स्टेप होता है, स्पेसिफिक एकेडमिक बैकग्राउंड आपका उसमें चेकआउट करते हैं. देन यू नीड टू गिव लिटिल अबाउट मोर एजुकेशन वैलिडेशन प्रोसेस. उसके लास्ट स्टेप आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो आपको उस पर बहुत टाइम मिल जाता है अगर आप इसे टाइमली फिल अप कर लोगे तो. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी इंशाल्लाह. एंड इन माय केस मैंने जो काम किया था, क्योंकि मुझे टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया था, तो उसके लिए आपको मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ टीचर मेरे पास हर वक्त पेन और कॉपी होती है. तो मैंने सबसे पहले इसको नोट डाउन किया था, की पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम ना. तो मैंने उसके की पॉइंट्स नोट किए उसके, और मैंने सिर्फ फोकस किया था व्हाट दे आर आस्किंग. हमें उसमें स्टोरीज राइट डाउन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. राइट इट वेरी प्रिसाइसली, ताकि आपको वो एक अच्छे से स्टेप वाइज आपको एक टेंशन नहीं होगी दैट यू हैव लिटिल टाइम, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी इंशाल्लाह. Thank you so much. I'm sure a lot of people will find this very useful. So, Wajiha, this is a personal question. How do you think scholarship ने आपकी life को change किया है या transform किया है? ट्रांसफॉर्म इन सेंस एज आई टोल्ड यू बिफोर, जिस तरह के एक फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा एक स्कॉलरशिप जो आपको होता है मोटिवेट करता है चीज़ परस्यू करने के लिए. और जैसे आपको बताया कि बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, व्हेन आई केम टू नो कि एक सरप्राइज गिफ्ट है हमारे लिए लैपटॉप, तो ये बहुत हेल्पफुल था. तो अब मैं इंशाल्लाह जैसा रिसर्च आर्टिकल लिखने आई या कोई भी अगर आपको काम करना है, एक आपके पास एक्स्ट्रा एक कहते हैं काइंड ऑफ अ बैंक अकाउंट, टोटल बैंक अकाउंट, तो वो आपके लिए एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था कि नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट इंशाल्लाह. तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ पर कि आपको उसी चीज़ पे मोटिवेट कर रहा है एक स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है. नाउ मोर पीपल आर कनेक्टेड विद यू, तो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन जाती है, इंटरेक्ट करते हैं पीपल से, तो आपको एक सोशल सर्कल में बिहेवियर आपका चेंज होता है. तो ओवरऑल आपको ये जो स्कॉलरशिप्स होती हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं. So I would also like to know कि during this entire process आपके आप क्या टिप्स देना चाहेंगी फ्यूचर स्टूडेंट्स को जो इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं? Also because we're on the topic of time, this Yes. scholarship is currently open and it will be closed on 15th September. So if you have any questions in the audience, you can email us and you can also post them in the comment section below, और हम इनको post कर और हम उनको answer करेंगे आपके लिए. Yes. Should I speak now? वेल अगर आप सजेशन या टिप्स के बारे में सोचते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्ट इट विद द नेम ऑफ अल्लाह. फिर आपका काम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि फाइनेंशियल एड तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, आपका काम हार्ड वर्क है. तो आप सबसे पहला स्टेप आपका यही आएगा कि आप फॉर्म एक ऑनेस्टली से फिल करो. यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रॉक्सी डाटा के दैट यू आर गोइंग टू फिल आउट द पिटीफुल इंफॉर्मेशन. तो आपको सिर्फ ऑनेस्टली से लिखो, हैव अ पेन एंड कॉपी, आप कीवर्ड्स लिखो उसके एक प्रॉपरली. आपको अगर टाइम है, टेक योर टाइम बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, आप उसे टाइम लो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रीड द क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 टाइम्स. और अगर आपको 3 टाइम भी पढ़ने की जरूरत आती है, डोंट वरी, आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हो, आप उसको 3 दफ़ा बेशक पढ़ो. और उसको जो थॉरली, उसको सबसे, इसके जो सेकंड स्टेप आता है ना, बिफोर अप्लाइंग, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि ये डेट है 15 सितंबर. तो आपने सबसे पहले जब आप इसको लिंक ओपन करोगे, तो यू आर गोइंग टू हैव अ डॉक्यूमेंट PDF फाइल ना. सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी पढ़ते, आप उस स्कॉलरशिप के बारे में जानोगे, दैट व्हाट इज स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप स्कीम. तो आप सबसे पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, देन गो फॉर
द नेक्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले हम लिंक ओपन करने की आपको जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जब कोई मसला हो यू कैन कॉन्टैक्ट ब्रिटिश कौंसल, तो इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। दैट इज़ रियली अप्रिशिएटिव कि आप लोग टाइम से करते हैं, मैनेज करते हैं और टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और इसके अलावा जो सबसे मेन जो टिप है ना अलावा कि आप टाइम वेस्ट नहीं करो, और आप किसी से मोटिवेट नहीं होगे कि उसने ये लिखा या इसको ये मिल चुका है तो मैं उससे ये लिखूं। राइट योर ओन डाटा, तो उसमें पर्सनल स्टेटमेंट पे फोकस करें, टाइम लें, 2 से 3 दफ़ा बेशक पढ़ें, और उसकी प्रूफ रीडिंग जो है वो ज़रूर करवाएं। बेशक आप खुद सेकेंड टाइम पढ़कर आंसर भी उसको भी प्रूफ रीड करें, या अगर आपके जैसा सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स आप चाहते हैं या फ्रेंड्स या एनी टीचर या एनी मेंटोर, तो आप बेशक उससे ज़रूर प्रूफ रीड करवाएं। Thank you, Aziha. Thank you, Aziha. So before moving थैंक यू। forward, uh, I will just give a little bit information about the scholarship. जो स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप का अवार्ड है वो बेसिकली कवर करता है ट्यूशन फ़ी फॉर द एलिजिबल फील्ड्स, जिसमें आती हैं एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंसेज। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉस्ट कवर होते हैं wherever they're applicable, and travel to and from home to university साल में 2 दफ़ा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कैंपस हॉस्टल में रह रहे हैं। और इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग दे आर अ पाकिस्तानी नेशनल, और वो करंटली पाकिस्तान में रह रहे हों, और दे आर परसुइंग अ 4-year bachelor's degree in the subjects which I mentioned previously, and they hold a confirmed admission letter from an AGC recognized university. So I would repeat that if you have any questions about the scholarship, you can post them in the comment section below or send us an email. And the deadline is very near, and as Vijay has already told us, that it is very important to apply timely. यस। So Vijay, this is again a personal question. What was your family's reaction to this when you were awarded the scholarship? एक्चुअली जब मुझे पता चला था आई इवन डोंट बिलीव, यू नो, जैसा कि पिछले स्कॉलर्स ने भी बताया, पिछले अवार्डीज ने, कि यू नो देयर हार्ड प्रोसेस होता है, एक टाइम टेकिंग थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, तो यू डोंट स्पेशली बिलीव। आई रेड, इवन दो आई रेड द ईमेल सेकंड टाइम कि इज इट रियली मी, एंड आई वाज लाइक आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर कि मेरी अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर सामने बैठे हुए थे, और एंड आई टोल्ड माय मदर कि मतलब जिस तरह कहते हैं कान में करके बताना कि मुझे ये मिली है, लेट मी हैव एन इंटरव्यू देन आई विल टेल द होल फैमिली राइट नाउ, लेट मी टेक अप डीप ब्रेथ कि ये मैं ही हूँ। बिकॉज यू नो कि डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई रियली अप्रिशिएट, और ये स्टेप वाइज एक फॉर्म जो है इनका बहुत यू नो यूजर फ्रेंडली फॉर्म है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको टाइम लेना है, उसके अलावा आपको कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसा यू नो ग्रामेटिक इशू, यस देयर आर फ्यू थिंग्स आई रियली वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जैसा आप डोंट गो कि आपको इसमें परेशानी होने की बात नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही सारा लिखना है। एक ग्रामेटिक दे आर नॉट गोइंग टू चेक आपको उसमें, ग्रामेटिक स्पेलिंग मिस्टेक, आप उसमें अपना डाटा एक अच्छे से पुट करो। उसके अलावा जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के अलावा आप यू रियली नीड टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। अगर आपको कोई डिफिकल्ट हो रही है तो आप ज़रूर गिवन कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करो या टेक्स्ट करो, या स्पेशली प्रेफरेबल ऑफिशियल होता है आप ईमेल करो। तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज गोइंग टू बी एनी डिफिकल्टी इन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज थिंग्स डू टेक टाइम। जैसा आप वैलिडेशन के लिए प्रोसेस होगा, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आई थिंक आई वुड रियली वांट टू पीपल जो भी सुन रहे हैं कि आप इंशाल्लाह करो, जस्ट गो फॉर इट, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इंशाल्लाह। एंड दैट्स ऑल। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू देम जो अब अप्लाई करना चाह रहे हैं। Thank you so much, Vijiha. So I have another question along the same lines कि आपको क्या फील होता है कि अगर एक स्कॉलरशिप जो है जो आपको एकेडमिकली हेल्प आउट कर रही है, तो क्या ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करने में भी हेल्प करती है, फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स, और एंड इट आल्सो गिव्स यू एक्सपोजर? तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? एक्चुअली एज आई टोल्ड बिफोर कि जैसा आप इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से, लाइक यू नो ऑफिशियल एक आपका सोशल सर्कल होता है, यू गेट टू नो मोर पीपल। तो आपको एक यू नो एकेडमिक फील्ड में रह के एक सोशल सर्कल का पता चलता है दैट कि इस एप्लीकेशन प्रोसीजर में या दिस
information take this much time एंड आपको सब एक ओवरऑल आप जैसा कहते हैं आप स्कूल सीखने जाते हो तो आप एक स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ये नॉट ओनली टू गेट ए बॉडी आपकी बॉडी के अलावा जैसा आप फॉर्म फिल करोगे दिस इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट फॉर्म although just take an example तो आपको पता चलता है that you're going to fill out the form first step going to be your name your father name your mother name your to validate फिर आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड आता है आपको पता होता है आपकी एक रिकॉल होना चीज मेमोरी में शुरू हो जाती है कि आपने बैचलर्स कब किया मास्टर आपने कब कंप्लीट किया इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी तो आपको पता होता है कि ये टाइम पीरियड से आपके ये सीजीपीए थे लाइक देयर सच लाइक यू कैन नॉट से लाइक इट्स अ जोक बट ये कि वाकई जब आप बैचलर्स या मास्टर स्टडीज में जाते हैं you don't remember the exact subject's name तो आपको एक रिकॉल होती है चीज इट्स नॉट ओनली फॉर सेक ऑफ अप्लाइंग तो आपको एक सारा मेमोरेंडम एक रेडी हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छी पर्सपेक्टिव होता है आपको द वेरी फर्स्ट थिंग अगर हम स्टेज वाइज जाएं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आता है यू गेट टू नो मोर पीपल यू गेट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट अप्लाइंग एंड कनेक्टिंग टू पीपल तो आपको कुछ अच्छा इंशाल्लाह रहेगा and I really want to say कि Scotland Pakistan scholarship they do reply you and they do give you a response so I would recommend this is the only I have got तो मैं तो ये recommend करूँगी कि ज़रूर एक बार आप ज़रूर इसे try करें so leave rest to Allah. Thank you, Waziha. So, after you were awarded the scholarship, क्या आपने दूसरे लोगों को encourage किया, like your family, your friends? How was that experience like? Yes, I did kind of, I just post the link first. I didn't, जैसे मैंने बताया कि मैं इतना श्योर नहीं थी और मैंने आहिस्ता से सिर्फ अम्मी को जाकर जिस तरह पहले बताया तो जब मुझे पूरा श्योर हो गया देयर वाज काइंड ऑफ अ हेक्टिक वर्क गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस तो वो थोड़ा एक सिचुएशन डिफिकल्ट थी तो इतना कनेक्शन नहीं रहा सोशलाइजेशन का लेकिन ये कि आफ्टर गेटिंग माशाल्लाह द सरप्राइज ऑफ लैपटॉप तो उसके बाद में सबको पता चला देन पीपल केम टू नो अबाउट मोर ऑफ द स्कॉलरशिप और इसकी बहुत अच्छे टाइम पे नॉट ओनली फॉर मी कि मैं कह रही थी कि रिसर्च स्टूडेंट के लिए एक अच्छा गिफ्ट था व्हेन पीपल केम टू नो मोर अबाउट द स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप पाकिस्तान तो ये बहुत बेस्ट टाइम रहा था और लोगों को खुद मतलब पता चलता है यू केम टू नो जो काम करता है फिर उसके बारे में सबको पता चल जाता है. थैंक यू वजीहा. हमारी उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है द सब्जेक्ट एरियाज जो कि ये स्कॉलरशिप कवर करती है वो हैं एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंसेज. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि द एप्लीकेंट्स द females who are applying they should be Pakistani nationals and वो currently पाकिस्तान में रह रहे होने चाहिए और they must be pursuing a 4-year bachelor's degree or a master's degree and they should hold a confirmed admission offer from any HEC recognized university in Pakistan. So if you qualify and you are checking all of these तो फिर आप इस application के लिए apply कर सकते हैं. So if you have any questions, you can post them in the comment section below और आप हमें email भी कर सकते हैं. हमारा email address जो है वो comment section में pin हुआ है आप वहाँ से access कर सकते हैं उसको. And the link to the application has also been posted in the comment section below. So Wajiha, thank you so much for doing this today. And अगर I also want to know कि आपने ये स्कॉलरशिप जो है वो अंडरग्रेड में भी अवेल की थी बिकॉज इट इज इट इज देयर फॉर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स. जी जैसा आपने कहा कि आपको पास एक प्रूफ होना चाहिए एडमिशन का तो आई अप्लाइड एट द वेरी बिगनिंग ऑफ माय एमफिल सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज ऑलमोस्ट द फाइनल ईयर तो दिस इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट इंशाल्लाह माय होल एमफिल. There is one thing I really want to add जिस तरह आप बता रही हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया I really want to repeat it again कि जिस तरह स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप ये बहुत बेस्ट क्राइटेरिया है वेरी प्रिसाइज क्राइटेरिया जिस तरह स्पेसिफिकली आपको बता दें यू ओनली नीड टू सी यूर यूनिवर्सिटी इज HEC recognized the very first thing. Second thing उसमें that you're got admission proof of admission this आपको दूसरे इसके अलावा जो PDF डॉक्यूमेंट है मैं दोबारा मतलब रिपीट करना चाह रही हूँ कि आप इसे ज़रूर एक थॉरली एक दफ़ा पढ़ें उसकी एलिजिबिलिटियाँ या फैक्ट्स क्राइटेरिया और पूरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट पढ़ें देन गो फॉर अप्लाइंग
एप्लीकेशन, यू नो कि आप ये नहीं कि एक आप लिंक आप खोल लें पीडीएफ जो आपकी डॉक्यूमेंट है और साइड पे आप एप्लीकेशन भी खोलें, इस तरह नहीं करना चाहिए, सब फिर आप कंफ्यूज होगे। इट्स बेटर एंड दिस इज़ वेरी ईजी, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो पहले आप सिर्फ पीडीएफ डिटेल डॉक्यूमेंट पढ़ें और उसके बाद आप अप्लाई करें, क्योंकि मोस्टली आपके बहुत अच्छे से इसके क्राइटेरिया जो स्पेशली एज फॉर फीमेल जो बैकग्राउंड जिनका जैसा हॉस्टलाइट्स हैं, तो उनके लिए दे आर गोइंग टू पे यू फॉर द यू नो हॉस्टलाइट ट्वाइस अ ईयर एज फार एज आई कैन रिमेंबर, राइट? फॉर द हॉस्टल दे आल्सो पे फॉर द हॉस्टल फी। तो ये बहुत अच्छी है, एक बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, यू नो, नॉट ओनली फॉर परस्यूइंग योर एजुकेशन, आप एक पूरा एक यू नो पैकेज है, फुल ऑफ पैकेज ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन, होल ऑफ द एकेडमिक इंफॉर्मेशन। Thank you so much for answering that, Vajiha. I'm sure a lot of people will have much more clarity now. So, for the people who are asking कि ये कौन सी universities को cover करते हैं, basically the universities which are recognized by HEC, they are covered by Scotland Pakistan scholarships. So the deadline is very near, and for those of you who are thinking of applying, the deadline is 15th September, and it would be great if you could apply before that. And अगर आपके कोई भी questions हैं, आप comment section में लिख सकते हैं, और आप हमें email भी, email address जो है वो comment section में post हुआ है pin comments में. So Vajiha, we're about to end the session now. अगर आपके कोई भी suggestions हैं, कोई भी comments हैं, if you want to say something to our audience, I think now would be the time. Yes, exactly, and that's why I repeated, you know, आपने जैसे पहले के बोला था कि this session is about to end, तो जिससे मैंने इसीलिए दोबारा रिपीट किया था कि I really want to you know motivate students कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, आप इसमें सिर्फ एक दफ़ा पढ़ो, आप उसे डॉक्यूमेंट को ज़रूर एक दफ़ा थॉरोली से पढ़ लो। द वेरी देयर द एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू बी वेरी इजी, यू नो। आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? योर इन्फॉर्मेशन, ओके, यू नो योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम एंड दीज थिंग्स। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यू कैन से, आपने जो एकेडमिकली, और नेक्स्ट स्टेप बैकग्राउंड, द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपने इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आपने एक दफ़ा अगर डॉक्यूमेंट थॉरोली पढ़ लिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फैक्ट्स में मोस्टली क्वेश्चन आंसर्ड हैं, यू नो, गो टू द साइट, ऑफिशियल साइट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल and click on the Scotland Pakistan scholarship scheme. According to your, if you're applying for bachelor's or PhD or you know MPhil, तो आप इसे बस वो पढ़ना है। और आई डोंट थिंक सो कि ट्वाइस आप उसको ज़रूर पढ़ो, प्रूफ रीडिंग उसकी ज़रूर आप बेशक खुद करो या अपने किसी एल्डर से। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू आर गोइंग टू यू नो वेरी इंजॉइंग, कि आप ये बहुत अच्छे से इंजॉय भी करोगे फॉर्म फिलिंग एंड आफ्टर इंशाल्लाह गेटिंग द स्कॉलरशिप। ऑल तो बस ये है कि आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा वैलिडेशन के लिए टाइम ले सकता है, उसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, यू नो, बिकॉज ऑफ द सच सिचुएशन एंड कोविड-19 सिचुएशन, रेगुलरली जैसा कुछ छुट्टियां आना, लॉकडाउन होना, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज दे आर गोइंग टू रिसीव योर एप्लीकेशंस। Thank If you there so is any much. question I can ask. Please go on. I really want to say कि is there any possibilities for student, you know, कि आप उसको एक देते हो, तो आप उसको देने से मुराद कि जैसा स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आप उसको एक प्रॉपरली वन लिंक हमें कोई प्रोवाइड किया जाए, जिस तरह आपने बताया कि आई थिंक आपने प्रोवाइड कर दिया शायद ऑलरेडी, स्पेसिफिक लिंक फॉर एप्लीकेशन और थ्रू द डॉक्यूमेंट। A specific link for the application has been posted in the comment section. तो वहाँ से जिन्होंने apply करना है उनको सारी information और सारा process as well as the link to the application available है. Yes. So okay, exactly. I just wanted to make sure कि एक दफा recall करवा दिया जाए, क्योंकि you know सबके लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। Absolutely. So thank you so much, Vajiha. Thank you so much for taking the time to do this. I'm sure बहुत सारे लोगों ने जो application process के बारे में learn किया होगा आपसे, और काफ़ी लोगों को clarity मिली होगी. So thank you to our audience for joining us today. अगर आपके कोई questions हैं, आप हमें email कर सकते हैं.
The email address is posted in the comments below. आप वहाँ से हमें access कर सकते हैं. Moreover, the link for the application is also posted, जिसमें सारा criteria, eligibility criteria और सारे जो भी information required है, that is all posted over there. And after the session ends, this will still be available in the video section of British Council Pakistan. आप वहाँ से हमें ये session फिर से देख सकते हैं और कोई भी questions हैं वो answer हो जाएंगे आपके. Thank you so much. Thank you, Wajiha. And we also have posted a feedback form in the comment section. आप उसे answer कर सकते हैं. If you have any feedback to give us, feel free to drop it over there. And the deadline is really near. It's on 15th September, and best of luck to all the applicants who are applying. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Wajiha. Thank you. Welcome. Allah Hafiz.